हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग आ चुके हैं अपने 1 वीक चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। आई होप आपको भी मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने में। तो मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स हम पढ़ रहे थे और कल हम लोग एक जगह आके 41 पेज पर रुक गए थे। तो उससे आगे पढ़ते हैं। Many healing followed. Obviously, all this was the work of potent suggestion to the subconscious mind. After the performance of certain mysterious rites, the devotees of Hecate would see the goddess during sleep, provided that before going to sleep they had prayed to her according to weird and fantastic instructions. They were told to mix lizards and raisins, frankincense and myrrh, and pound all this together in the open air under the crescent moon. Healing were reported in many cases following this grotesque procedure. It is obvious that these strange procedures, as mentioned in the illustrations given, favored suggestion and acceptance by the subconscious mind of these people by making powerful appeal to their imagination. तो क्या होता है, आपने देखा होगा लोग काला जादू वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनके जो स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है ना, ये सब करने से पूंछ छिपकली की पूंछ काट के मिक्स कर देना, वो मिक्स कर देना, ऐसे ऐसे काम करने के बाद उनके अंदर से बिलीव होता है कि ये चीज़ पूरी हो जाएगी। तो वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, वो जादू ये वो उससे कुछ नहीं होता, वो ऐसा बता रहे हैं। वो बिलीव पे डिपेंड करता है सब। एक्चुअली इन ऑल दीज हीलिंग्स द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द सब्जेक्ट वॉज हीलर। अब क्या होता है कि जो हम दिखाते ना, ये भाई नींबू काट के दिखा दिया, इसमें से लाल आ गया, अब आपकी तबीयत सब ठीक हो जाएगी, तो इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। वो ये सब नाटक कर रहे हैं ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसे मान ले कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, और फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें जो हमारा दिमाग है वही हमें ठीक कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, ये बात याद रखना। आप किसी के पास जाओ, 5,000 रुपये दो, उसे बोलो भाई कुछ जादू टोना करके मुझे ठीक कर दे, या तो इससे बढ़िया उस 5,000 रुपये का इंजॉय करो और अपने दिमाग को बोलो सेल्फ हील करे। बोलो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो जाओगे। इन ऑल एजेस अनऑफिशियल हीलर्स हैव ऑब्टेन रिमार्केबल रिजल्ट इन केसेस वेयर ऑथराइज मेडिकल स्किल हैज़ फेल्ड। आपने देखा होगा जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, भाई ये बीमारी हमसे सॉल्व नहीं होगी, आप कहीं और दिखा लो, हमारे हाथ में नहीं है। तो जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं उसके बाद भी आपने देखा है कुछ लोग लड़ लड़ के अपनी ज़िंदगी से अपने आप को ठीक कर लेते हैं। कैंसर जैसी बीमारी को लोग अपने आप ठीक कर लेते हैं। कैसे? हमारी बॉडी बनाई ऐसे गई है ताकि हम लोग अपने को सेल्फ हील कर सके, बट हमें उस पावर को समझना होगा ना। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही तो है असली चीज़, यही तो सब ठीक कर रही है। Many of the remedies and methods employed were rather strange and fantastic, which fired the imagination of patient, causing an aroused emotion state. This state of mind facilitated and suggestion of health, and was accepted both by the conscious and subconscious mind of the sick. This will be elaborated on further in the next chapter. Biblical accounts on the use of the subconscious powers. What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Mark 11:24. Note the difference in tenses. अब देखना, biblical account on the use of the subconscious power. Note the difference in tenses. The inspired writer tell us to believe. The inspired writer tell us to believe and accept as true the fact that our desire has already been accomplished and fulfilled, that is, already completed, and that its realization will follow as a thing in the future. The success of this technique depends on the confident conviction that the thought, the idea, the picture is already a fact in mind. In order for anything to have substance in the realm of mind, it must be thought of as actually existing there. ठीक है, तो आप ये समझ लो कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो ऑलरेडी एक फैक्ट है, और अगर हम उस चीज़ को मान लें, सच्चाई मान लें, तो वो चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, आपके सामने दिखने भी लग जाएंगी, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ जाएगी। अभी जो भी आपके दिमाग में पिक्चर चल रही है उसे सच मानो। मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना पैसा कमा लूँगा, या फिर मैं कुछ लोगों की मदद करूँगा, पैसे नहीं है आपके पास फिर भी मदद करूँगा, तो कर सकते हो आप, बहुत लोग कर भी रहे, आप भी कर सकते हो। बस दिल बड़ा रखो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और ये कभी मत सोचना कि आप किसी से कम हो। You are best in your own way. Here, in a few cryptic words, is a concise and specific direction for making use of the creative power of thought by impressing upon the subconscious and the particular thing which you desire. अब क्या बोला है
Your thought, idea, plan, or purpose is as real on its own plane as your hand or your heart. In following the biblical technique, you completely eliminate from your mind all consideration of the conditions, circumstance, or anything which might imply adverse contingents. You are planting a seed in the mind which, if you leave it undistributed, will infallibly germinate into external fruition. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप क्या करोगे, कोई भी प्रॉब्लम है आपके, मतलब अगर आप कोई भी अपने दिमाग में बीज बो रहे हो, मतलब कोई भी आइडिया, कॉन्सेप्ट या कुछ भी ला रहे हो, और अगर आपने उसे ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, किसी और के लिए, आप ही के लिए प्रॉब्लम करेगा. द प्राइम कंडीशन विच जीसस इंसिस्टेड अपॉन वॉज फेथ. जीसस ने बोला है फेथ रखो. ओवर एंड ओवर अगेन यू रेड इन द बाइबल. अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो अकॉर्डिंग टू योर फेथ इज इट डन अनटू यू. फेथ भी तब काम करेगा जब आप उस पर भरोसा रखोगे. फेथ पे भरोसा. इफ़ यू प्लांट सर्टेन टाइप्स ऑफ सीड्स इन द ग्राउंड, यू हैव फेथ दे विल ग्रो आफ्टर देयर काइंड. अब क्या होता है, अगर आप कोई भी बीज बोते हो तो वो उगता है, तब उगेगा जब आप उसे सच्चे मन से मानोगे कि हाँ ये उगे, पानी डाल रहे हो, बोलोगे हाँ ये उगेगा. अगर आप करके देखना, कोई भी अच्छा पौधा, आपकी ज़मीन भी सही है, सब कुछ सही है, अगर आप सोचो कि नहीं उगेगा नहीं उगेगा, तो नहीं उगेगा, मुरझा जाएगा थोड़ा सा उगने के बाद. दिस इज़ द वे ऑफ सीड्स एंड ट्रस्टिंग द लॉ ऑफ ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर. यू नो दैट सीड विल कम फोर्थ आफ्टर देयर काइंड. आपको पता है एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हमें पता है हमने जो बोया है वो उगेगा, है ना. हमने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं उगेगा. हाँ, किसान हमेशा यही सोचता है अगर मैंने बीज बोया है तो वो उगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उगेगा, उसे उगना होगा. Faith, as mentioned in the Bible, is a way of thinking, an attitude of mind, an inner certitude, knowing that the idea you fully accept in your conscious mind will be embodied in your subconscious mind and made manifest. तो हमेशा याद रखो, कोई भी आपका आइडिया है, कोई भी जो चीज़ आप मानना चाहते हो, वो आपके दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में पहले है, फिर उसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. तो कॉन्शियस माइंड से अगर आप बोलोगे कि भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, वो कमांड देगा सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर इतनी है कि क्या बताएं. फेथ इज इन अ सेंस एक्सेप्टिंग इज ट्रू वॉट योर रीजन्स एंड सेंस टेनी, अ शाउटिंग आउट ऑफ द little rational analytical conscious mind and embracing an attitude of complete reliance on the inner power of your subconscious mind. A classical instance of Bible technique is recorded in Matthew 9:28-30. And when he was come into the house, the blind men came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. And their eyes were opened, and Jesus straightly charged them, saying, See that no man know it. In the words, according to your faith, be it unto you. Be it unto you. You can see that Jesus was actually appealing to the corporations of the subconscious mind of the blind men. Their faith was their great expectancy, their inner feelings, their inner conviction that something miraculous would happen and that their prayer would be answered. And it was. This is the time honored technique of healing, utilized alike all healing groups throughout the world, regardless of religious affiliation. In the words, see that no man know it, Jesus enjoins the newly healed patients not to discuss their healing because they might be subjected to the skeptical and derogatory criticism of the unbelieving. This might tend to undo the benefits they had received at the hand of Jesus by depositing thoughts of fears, doubt, anxiety in the subconscious mind. For with authority and power he commandeth and unclean spirits, and they come out. Luke. When the sick came to Jesus to be healed, they were healed by their faith, together with his faith and understanding of healing power of the subconscious mind. तो जब भी कोई जीसस के पास आता था अपनी बीमारी लेकर, तो वो अपने फेथ की वजह से ठीक होता था, और जीसस की बातों, मतलब जो वो ज्ञान देते थे उसकी वजह से. क्योंकि जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करोगे, अगर आप किसी और पे भी भरोसा कर रहे हो, जैसे जीसस पे उन्होंने किया कि हाँ ये ठीक कर देते हैं, मैं इनके पास जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ तक लेकर आएगा और वो ठीक भी करवा देगा.
पर आपने ये सोचा ना कि वो मुझे ठीक करेंगे। अगर आप ये भी सोचते कि मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ, खुद को ठीक कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ, तो क्या पता आप सेल्फ हील भी हो जाते। Whatever he decreed, he felt inwardly to be true. He and the people needing help were in the one universal subjective mind, and his silent inner knowing and conviction of the healing power changed the negative destructive patterns in the patient's subconscious mind. The resultant healings were the automatic response to the internal mental change. His command was his appeal to the subconscious mind of the patient plus his awareness, feeling an absolute trust in the response of the subconscious mind to the word which he spoke with authority. Miracles at various shrines throughout the world. It is an established fact that cures have taken place at various shrines throughout the world, such as in Japan, India, Europe, and America. I have visited several of the famous shrines in Japan. At the world famous shrine called Daibutsu is a Jinjanitic divinity of bronze where Buddha is seated with folded hands and the head is inclined in the attitude of profound contemplative ecstasy. My God, बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड यूज़ किए इन लोगों ने। एक बार लेट मी चेक। इंटरनेट भी बंद हो गया है, मेरा मोबाइल ही ऑफ है क्या, ऑन हो रहा है, चलो देखते हैं। Attitude of profound contemplative ecstasy. It is 42 feet in the height and is called the Great Buddha. Great Buddha एक बहुत बड़ी एक स्टैचू है। कहाँ पे? I have visited several of the famous shrines in Japan. Daibutsu, a Jinjetic divinity of bronze ware Buddha. तो जापान में एक बहुत बड़ी मूर्ति है, दायबुत्सु कहते हैं उन्हें, जहाँ पे बुद्धा अपने हैंड को फोल्ड करके ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। हाँ, तो उस बुद्धा की जो हाइट है वो है 42 फीट। Here I saw young and old making offering. At his feet, money, fruit, rice, and oranges were offered. Candles were lit, incense was burnt, and prayer of petition recited. The guide explained the chant of a young girl as she murmured a prayer, bowed low, and placed 2 oranges as an offering. She also lit a candle. He said she had lost her voice and it was restored at the shrine. She was thanking Buddha for restoring her voice. She had the simple faith that Buddha would give her back her singing voice if she followed a certain ritual, fasted, and made certain offerings. All this helped to kindle faith and expectancy, resulting in conditioning of her mind to point of belief. Her subconscious mind responded to her belief. अब होता है ना कि आप सोचते हो कि भाई मैंने ये इस बिज़नेस में काम किया तो मैं ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा। लोग करते रहते हैं और वो सक्सेसफुल भी बन जाते हैं। पर ये आपकी मेहनत और आपके दिमाग का खेल है। अगर आपने किसी चीज़ को मान लिया कि हाँ इसी से होगा तो इसी से होगा और किसी से नहीं होगा। To illustrate further the power of imagination and blind belief, I will relate that case of a relative of mine who had tuberculosis. His lungs were badly diseased. His son decided to heal his father. He came home to Perth, Western Australia, where his father lived, and said to him that he had met a monk who had returned from one of the healing shrines in Europe. This monk sold him a piece of true cross. He said that he gave the monk the equivalent $500 for it. This young man had actually picked up a splinter of wood from the sidewalk, went to the jeweler's, and had it set in a ring so that it looked real. He told his father that just touching the ring or cross healed many. He inflamed the fire in father's imagination to the point that the old gentleman snatched the ring from him, placed it over his chest, prayed silently, and went to sleep. In the morning he was healed. All clinic tests proved negative. क्या बात है? मतलब एक बेटा और बाप की कहानी है कि अगर उसके पापा को लंग्स कैंसर था, उसके बेटे ने एक मॉन्क से एक चीज़ खरीदी जो कि मॉन्क ने मतलब ऐसे ही ज़मीन से उठाई हुई थी। मतलब बोला कि मैंने एक मॉन्क से लिया, ये $500 की एक लकड़ी है, स्पेशल लकड़ी का
ठीक है, तो रिंग है, स्पेशल लकड़ी की एक रिंग बनवाई उसने। सिंपल से क्या किया, रोड से उठाई एक लकड़ी और एक रिंग बनवा दी उसकी, और पापा को ये बोला कि $500 की है ये, मैंने एक मॉन्क से ली है और उन्होंने बहुत लोगों को ठीक किया है, आप इसको पहनोगे, आप देखना चमत्कार हो जाएगा, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या हुआ, उसके पापा ने तुरंत उसके बच्चे से वो रिंग छीनी, अपने चेस्ट में रखी और प्रे किया कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ। अगले दिन सुबह उठे, उनके चेस्ट में लंग्स कैंसर का कोई भी निशान नहीं था, कोई भी क्लिनिकल रिपोर्ट में वो आया ही नहीं। और वो हील कैसे हुआ, वो सेल्फ बिलीव और सबकॉन्शियस माइंड नहीं तो किया। ऑल द क्लिनिक टेस्ट प्रूव नेगेटिव। You know, of course, it was not the splinter of the wood from the sidewalk that healed him. आप सबको पता है वो लकड़ी के टुकड़े में इतनी ताकत नहीं है कि आपके लंग्स के कैंसर को मिटा सकें, या फिर उसके पापा के लंग्स के कैंसर को मिटा सकें। पर हुआ क्या, इट वॉज हिज इमेजिनेशन अराउज्ड टू एन इंटेंस डिग्री प्लस द कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी ऑफ द परफेक्ट हीलिंग. Imagination was joined to faith or subjective feeling, and the union of the two brought about a healing. The father never learned of the trick that had been played upon him. If he had, he probably would have had a relapse. He remained completely cured and passed away 15 years later at the age of 89. अब देखो क्या हुआ, द फादर नेवर लर्न द ट्रिक दैट हैड हैपन प्लेड अपॉन हिम. उसके पापा कभी नहीं समझ पाए जो उसके साथ खेला गया उसके बच्चे द्वारा, मतलब जो लकड़ी वाली रिंग पहनाई उसके पापा को और उसका लंग्स ठीक हो गया, उसके पापा कभी नहीं समझ पाए इस बात को, ना उसने बताया. अब क्या हुआ, इफ़ ही हैड ही प्रोबेबली वुड हैव हैड अ रिलैप्स. ही रिमेन कम्प्लीटली क्योर्ड एंड पास्ड अवे इन 15 ईयर्स लेटर इन द एज ऑफ 89. और ये देखो, अगर उसके पापा को पता चल जाता ये ट्रिक थी तो क्या पता वो कैंसर वापस भी आ जाता, क्योंकि होता है ना माइंड में कि यार ये तो मजाक है, ये तो नहीं मेरे को हुआ होगा, वो टेंशन में आ जाते हैं, दोबारा टेस्ट वगैरह करने लग जाते हैं, और जितना हम सोचते हैं ना बीमारी के बारे में उतना ना वो बीमारी हम पे हावी हो जाती है. तो इस बीमारी के 15 साल बाद उनकी डेथ हुई 89 ईयर्स के जब वो गए. तो 89 ईयर्स काफ़ी होता है इंसान के लिए जीना, इससे ज़्यादा जीना चाहते हो तो एक्सरसाइज करते रहो. One universal healing principle. It is well known fact that all the various schools of healing effect cures of the most wonderful character. The most obvious conclusion which strikes your mind is that there must be some underlying principle which is common to them all, namely the subconscious mind, and one process of healing is faith. It will now be in order to recall to your mind once more following fundamental truths. First, that you possess mental functions which have been disguised by designating one of the conscious mind and the other subconscious mind. Secondly, your subconscious mind is constantly amenable to the power of suggestion. Furthermore, your subconscious mind has complete control of your functions, conditions, and sensation of your body. I venture to believe that all the readers of this book are familiar with the fact that symptoms of almost any disease can be induced in hypnotic subject by suggestions. For example, a subject in hypnotic state can develop a high temperature, flushed face, or chill according to the nature of the suggestion given. By experiment, you can suggest the person that he is paralyzed and cannot walk. It will be so. By the illustration, you can hold a cup of cold water under the nose of hypnotic subject and tell him, "This is full of pepper, smell it." He will proceed to sneeze. What do you think caused him to sneeze, the water or the suggestion? अब देखो क्या होता है कि अगर हम किसी हिप्नोटिक बंदे को बोले कि इस ग्लास में पानी है, जबकि पानी है उस ग्लास में, और हम उसे बोले कि इसमें ब्लैक पेपर सॉल्ट है, तो आप जब इसे सूंघोगे तो आप छींक मारोगे, अगर आप हिप्नोटाइज हो रहे हो. तो ये चीज़ें हैं. इफ़ अ मैन सेज ही इज़ एलर्जिक टू तिमोथी ग्रास, you can place a synthetic flower or an empty glass in front of his nose when he is hypnotic state and tell him it is Timothy glass. He will portray the usual allergic symptoms. This indicates that the cause of the disease is in the mind. The healing of the disease can also take place mentally. तो कभी भी याद रखना कि बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए तो क्या किया गया कि एक बंदे को रोज़ से एलर्जी है, उसको बोला गया, समझ लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि रोज़ से एलर्जी है और आप रोज़ का एक गार्डन में हो, आप एक रोज़ के गार्डन में हो, एक हिप्नोटिक बंदे को बोला, मतलब हिप्नोटाइज करके बोला,
तो वो बंदा सोचने लग गया, उसको स्मेल आने लग गई, जबकि सामने कुछ भी नहीं है, कोई गार्डन वार्डन नहीं है। तो वो उसकी स्मेल को सूंघ कर स्नीज़ किया, छींका, वो जो करना था वो किया। तो हमेशा याद रखना कि वहाँ कुछ भी नहीं है, गार्डन वार्डन कुछ नहीं है। तो ये बीमारी हमारी सोच में है, ठीक है। जब बीमारी सोच में है तो सोल्यूशन कहाँ है? हमारी सोच में ही है। यू रियलाइज द रिमार्केबल हीलिंग टेक प्लेस थ्रू osteopathy, chiropractic medicine, and naturopathy, as well as through all the various religious bodied throughout the world. But it is obvious that all these healings are brought about through the subconscious mind, and only healer there is. Notice how it heals a cut on your face caused by shaving. It knows exactly how to do it. The doctor dresses the wound and says, Nature heals it. Nature refers to natural law, the law of subconscious mind and self preservation, which is the function of the subconscious mind. The instinct of self preservation is the first law of nature. Your strongest instinct is the most potent of all the autosuggestions. Widely different theories. It would be tedious and unprofitable to discuss to any great extent the numerous theories advanced by different religious sectors and prayer therapy groups. There are a great number of who claim that because their theory produce result, it is therefore the correct one. This, as explained in this chapter, cannot be true. अब क्या होता है कि अलग अलग थ्योरीज लगाते हैं लोग, इधर से उधर से, इधर से उधर से, और वो हर कोई दावा करता है मेरी थ्योरी पे काम करो, आपको मंजिल मिल जाएगी। हमें भी मिली है। यू आर अवेयर दैट देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ हीलिंग। आपको पता है कि यहाँ पे दुनिया में बहुत सारी तरह की हीलिंग है। फ्रांस एंटनसन मेस्मर, an Australian physician who practiced in Paris, discovered that by applying magnets to diseased body, he could cure the disease miraculously. अब एक बंदा था पेरिस का, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था जिसका नाम था फ्रांस एंटन मेस्मर। उसका मानना था कि अगर मैंने बॉडी पे मैग्नेट लगाया तो मैं किसी भी डिजीज बॉडी को ठीक कर सकता हूँ। ही ऑल्सो परफॉर्म्ड cures with various other pieces of glass and metals. He continued this form of healing, claimed that his cures were due to animal magnetism, theorizing that this substance was projected from the healer to the patient. This method of treating disease from then on was by hypnotism, which was called mesmerism in his day. Other physicians said that all his healing were due to suggestion, not and nothing else. मतलब लोग जो बाकी फिजिशियंस थे वो कहते थे बस एक सजेशन से चल रहा है इसका काम, और कुछ नहीं। All these groups, such as psychiatrists, psychologists, osteopaths, chiropractors, physicians, and all the crunches, and using one universal power resident in the subconscious mind, each may proclaim the healing are due to their theory. The process of healing is a definite positive mental attitude, an inner attitude, or a way thinking called faith. ठीक है, ऐसी हीलिंग जो कि डेफिनाइट है, पॉजिटिव है, मेंटल एटीट्यूड के साथ की जाती है, इनर एटीट्यूड के साथ की जाती है, अ वे ऑफ थिंकिंग है, दैट इज़ कॉल्ड फेथ। अगर आपको किसी चीज़ में फेथ है, अगर आपका फेथ है अपने गोल्स पे, तो वो चीज़ पूरी होगी। हीलिंग इज़ ड्यू टू कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी which acts as a powerful suggestion to the subconscious mind, releasing its healing potential. अब क्या होता है कि जो हीलिंग है ना, वो होती क्यों है? आपके कॉन्फिडेंस से। आप एक बड़े डॉक्टर के पास चले गए और आपने सोच लिया हाँ भाई इसके पास तो इतनी सारी डिग्रियाँ हैं, अब तो मेरा इलाज हो ही जाएगा। और जब आपने ये सोच लिया ना तो ठीक हो जाओगे आप। और उसी चीज़ को आप घर पे रह के भी ठीक कर सकते हो, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि आपने मन में बना लिया है कि मैं जब तक कोई दवा ना खा लूँ तब तक ठीक नहीं हो सकता। मैंने देखा बहुत लोग बीमार होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, उन्हें दवाई खाने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं दवाई खा खा के और बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बीमारी होती नहीं है और वो उसको सीरियसली ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रॉब्लम है बट डॉक्टर के पास नहीं जाना, दैट इज़ ऑल्सो बैड थिंग। जब आपको पता है, आपको डॉक्टर पे भी भरोसा करना है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है तो जाओ तुरंत डॉक्टर को दिखाओ और भरोसा रखो कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाने के बाद भी डरते रहते हैं, भाई ये हो गया वो हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता। तो ये मत करो।
अपने अंदर फेथ रखो कि मैं ठीक हो जाऊंगा. वन man does not heal by different powers than another. It is true that he may have his own theory or method. There is only one process of healing, and that is faith. There is only one healing power, namely your subconscious mind. Select the theory and mention you prefer. You can result assured. If you have faith, you shall get results. Views of Paracelsus. अब Paracelsus क्या है? Philippus Paracelsus, a famous Swiss alchemist and physician who lived 1493 to 1541, was a great healer in his days. वो बहुत अच्छे healer थे. He stated what is now an obvious scientific fact when he uttered these words: whether the object your faith be real or false, you will nevertheless obtain the same effects. Thus, if I believed in Saint Peter's statue, as I should have believed in Saint Peter's himself, I shall obtain the same effect that I should have obtained from Saint Peter. But that is superstition. Faith, however, produces miracles. सुपरस्टिशन चीज़ें अलग होती है और फेथ अलग चीज़ होती है. फेथ प्रोड्यूस करता है मिरेकल्स, एंड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स फेथ, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम वंडर्स. चाहे वो सच हो या झूठा फेथ हो या सच्चा फेथ हो, आप किसी चीज़ पे फेथ करोगे ना, वो चीज़ पॉजिटिव हो ही जाएगी. भरोसा तो रखो, वो चीज़ होगी. चाहे आप अच्छा सोचो बुरा सोचो, वो चीज़ होगी ही, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हो. द व्यूज़ ऑफ पैरासेल्सियस were also entertained in the 16th century by Pietro Pomponazzi, an Italian philosopher and contemporary of Paracelsus, who said, "We can easily conceive the marvelous effects which confidence and imagination can produce, particularly when both qualities and reciprocated between the subject and the person who influences them. The cures attribute the influence of certain relics and the effects of their imagination and confidence coact, and philosopher knows that if the bones of any skeleton were put in the place of the saint's bone, the sick would none the less experience beneficial effects. If they believed that they were vertebral relics, then if you believe in the house of saint to heal, or if you believe in the healing power of certain waters, you will get results because of the powerful suggestion given to your subconscious mind. It is the latter that does the healing. ठीक है, पेज नंबर 48 तक पहुंच गए गाइस हम लोग. ओके, अभी ना बहुत ज़्यादा नींद टाइप की आ रही है, आधा घंटा भी नहीं हुआ नींद आने लग गई. पेज नंबर 50 तक पढ़ने के बाद इसको ख़त्म करेंगे. पेज नंबर 48 पे है, ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि जो बेसिकली इन्फ्लुएंसर है और या फिर जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन दोनों का जब बिलीव सेम हो जाता है ना, तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती है. क्वाक्स एंड फिलोसफर नोज दैट इफ द बोन्स ऑफ एनी स्केलेटन वर पुट इन प्लेस द सेम बोन्स, द सिक वुड नन द लेस एक्सपीरियंस बेनिफिशियल इफेक्ट इफ दे बिलीव दैट दे वर वर्टेबल रिलिक्स. आप सोचो, किसी भी स्केलेटन की अगर आप बोन को तरीके से जोड़ोगे, सीरियल वाइज जोड़ोगे, तो वो पूरा ढांचा बन जाएगा. तो वैसे ही अगर आप अपने फॉलोअर्स को कुछ वो बताते हो, क्या बोलते हैं, जीवन के सीक्रेट्स, मतलब या फिर किसी पेशेंट की आप मदद करते हो हील करने में, तो वो अपने आप धीरे धीरे करते हील होता जाता है, क्योंकि एक आपका बिलीव है और आपके एक फॉलोअर का बिलीव है कि हाँ, इसके पास जाने से मैं ठीक हो जाऊँगा. तो जब दोनों माइंड एक साथ चलेंगे तो फिर काम आसान हो जाएगा. बर्नेथेन एक्सपेरिमेंट्स. हिपोलाइट बर्नेम, professor of medicine at Nancy, France, 1910 to 1919, was the expounder of the fact that the suggestion of the physician to be patient was exerted through the subconscious mind. Bernheim, in his suggestion Therapeutics, page 197, tells a story of a man with paralysis of the tongue which had yielded to no form of treatment. अब एक पहले की बात है जिसमें लिखा था, सजेशन दिया था थेरापेटिक्स का. एक बंदा है जिसकी जो टंग वो पैरालाइज हो गई थी और वो कुछ बोल नहीं पाता, और इसका अभी तक कहीं पे इलाज नहीं था उस टाइम पे. His doctor told the patient that he had a new instrument with which he promised to heal him.
He introduced a pocket thermometer with the patient's mouth. The patients imagined it to be instrument, which was to save him. In few moments he cried out joyfully, and he could once more move his tongue freely. अब क्या हुआ उस डॉक्टर ने उसे एक थर्मामीटर दिया और जीभ के नीचे रखा और उसी से उसने सोचा कि यार ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो कुछ ऐसा है जो कि मेरी ज़बान को ठीक कर देगा, मेरा जो पैरालिसिस है ज़बान का, टंग का, वो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए वो थर्मामीटर उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। उसको नहीं पता इससे बस हम लोग टेम्परेचर नाप सकते हैं। उसको उल्लू बना दिया। बट फाइनली वो रोने लगा कि भाई चलो एक होप आया, उम्मीद आई, और रोने से उसकी आवाज़ तो आई ना, जीभ मूव तो करने लगी उसके हिसाब से। Among our cases, continues Bareem, fact of the same sort will be found. We young girl came into my office having suffered from complete loss of speech for nearly 4 weeks. After making sure of the diagnosis, I told my students that loss of speech sometimes healed instantly to electricity, which might act simply by its suggestive influence. I sent for the induction apparatus. I applied my hand over the larynx and moved a little. Okay, I told my students that loss of speech sometimes heal instantly to electricity, which might act simply by suggestive influence. I sent for the induction apparatus. I applied my hand over my larynx and moved a little, and said, "Now you can speak aloud." In an instant, I made her saw A and B, then Maria. She continued to speak distinctively. The loss of voice had disappeared. Here, Burnham is showing the power of faith and expectancy on the part of the patient, which act as a powerful suggestion to the subconscious mind. अब इस बुक में क्या बताया जा रहा है? इस बुक में बस ये बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने फेथ, पावर ऑफ फेथ का यूज़ करके और पावर ऑफ एक्सपेक्टेंसी का यूज़ करके कैसे आप पेशेंट से एक नॉर्मल इंसान बन सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड ही तो करवा रहा है। प्रोड्यूसिंग अ ब्लिस्टर बाय सजेशन। अब देखो, प्रोड्यूसिंग अ ब्लिस्टर बाय सजेशन. Barham stated that he produced blisters on the back of the patient's neck by applying a postage stamp and suggesting to the patient that it was fly plaster. This has been confirmed by experiments of many doctors in many parts of the world, which leave no doubt that structural change are a possible result of oral suggestion to patients. अब क्या है कि स्ट्रक्चरल चेंज से बढ़िया लोग क्या कहते हैं, ओरल सजेशंस दे दो, मतलब बोल दो। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, नींद से आ रही, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बरहेम स्टेट दैट ही प्रोड्यूस अ ब्लिस्टर ऑन द बैक, उसके पीठ पे ब्लिस्टर हुआ, ऑफ पेशेंट्स नेक बाय अप्लाइंग अ पोस्टेज स्टैम्प एंड सजेस्टिंग टू द पेशेंट दैट इट वॉज फ्लाई प्लास्टर. This has been confirmed by the experiment and experience of many doctors in many parts of the world, which leaves no doubt the structural change are a possible result of the oral to the patient. The cause of bloody stigmata. In Hudson Law Physics Phenomena, page 153, he states hemorrhages and bloody stigmata may be induced in certain subjects by means of suggestion. Dr. Amburo put a subject into the somnambulistic condition and gave him the following suggestion: at 4 o'clock this afternoon after the hypnosis will you will you will come into my office, sit down in the armchair, cross your arms upon your beast, and your nose will begin to bleed. अब क्या बोला? You will come into my office, sit down in armchair, cross your arms upon your breast, and your nose will begin to bleed. At the hour appointed, the young man did as directed. Several drops of blood came from the left nostril. On the other occasion, the same investigator traced the patient name on both the forearms with the dull point of view of an instrument. Then, when the patient was somnambulistic condition, he said, "At 4 o'clock
This afternoon you will go to sleep, and your arms will bleed along the lines which I have traced, and your name will appear written on your arms in letter of blood. He watched at 4 o'clock and seemed to fall asleep. Once the left arm, the letter stood out in bright relief, and in several places there are drops of blood. The letter was still visible, and months afterward, although they had gradually grown faint. These facts demonstrate at once the correctness of the two fundamental positions previously stated, namely the constant amenability of the subconscious mind to the पावर ऑफ सजेशन एंड परफेक्ट कंट्रोल. तो ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल क्या है? पावर ऑफ सजेशन, पावर ऑफ कंट्रोल विच द सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइजेज, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सरसाइज करता रहता है ओवर द फंक्शन, सेंसेशन एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी. All the forging phenomena dramatized vividly, abnormal condition induced by suggestion and are conclusive proof that as a man thinking is his heart, subconscious mind, so is he. Healing points in review. Healing points in review. Remind yourself, बस only one page is left guys, only one page is left. और उसके बाद हम लोग छुट्टी लेंगे. आगे बढ़ते हैं. हीलिंग पॉइंट्स इन रिव्यू. अब हम पढ़ते हैं हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में. रिमाइंड योर सेल्फ फ्रिक्वेंटली दैट हीलिंग पावर इज इन योर ओन सबकॉन्शियस माइंड. पहले तो आप ये बोलो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी के अंदर सारी हीलिंग पावर्स है. सेकेंड, know the faith is like a seed planted in the ground. It grows after its kind. Plant the idea in your mind, water and fertilize it with expectancy, and it will manifest. तो जैसे आप ज़मीन में बीज बोते हो फेथ के साथ, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है ना. गमले से एक पौधा उगता है ना, तो वैसे ही अपने दिमाग को सोचो कि आपने कोई आइडिया डाला है और एक्सपेक्टेंसी उसका खाद और फर्टिलाइज़र और पानी है. एक्सपेक्टेंसी मतलब आप जानते हो कि वो होगा, 100% जानते हो. दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी. कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो होगा. द आइडिया यू विल हैव फॉर अ बुक, न्यू इन्वेंशन और प्ले इज़ रियल इन योर माइंड. दिस इज़ वाई यू कैन बिलीव यू हैव इट नाउ. Believe in the reality of your idea, plan or invention, and as you do, it will become manifest. In praying for another, know that your silent inner knowing of wholeness, beauty and perfection can change the negative patterns of the other's subconscious mind and bring out wonderful results. अब क्या करें? in praying for others, अगर आप किसी और के लिए प्रे करोगे, know that your silent inner knowing of wholeness, beauty and perfection can change the negative patterns of the other's subconscious mind. The miraculous healing you hear about various shrines are due to imagine and blind faith which act on the subconscious mind, releasing the healing power. All disease, sixth पढ़ रहे हैं, all disease originates in the mind. जितनी भी बीमारियां हैं वो यहीं से जनरेट होती हैं. Nothing appears on the body unless there is a mental pattern corresponding to it. कोई भी ये तब तक नहीं दिखेगी जब तक आपका बॉडी और दिमाग का बैलेंस हिलेगा नहीं. जैसे ही बॉडी और माइंड का बैलेंस हिला तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है. The symptoms of almost any disease can be induced in you by hypnotic suggestion. This shows you the power of your thought. There is only one process of healing and that is faith. एक ही process है, that is faith. There is only one healing power, namely your subconscious mind. Whether the subject of your faith is real or false, you will get results. Your subconscious mind responds to the thought in your mind. Look upon faith as thought in your mind and that will suffice. अब क्या, whether the object of your faith is a real or false, चाहे आपका faith real हो या false, you will get result. आप बुरा सोचो अच्छा सोचो, रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स. आजकल कैसे हीलिंग हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो देखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है. पेज नंबर 52 से शुरू है, 61 पे ख़त्म है. इसको हम लोग जल्दी पढ़ेंगे. प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, 6 चैप्टर हैं. चलो ये बड़ा है, इसको पढ़ेंगे बाद में. Mental healing in modern times. Mental healing in
एंशिएंट टाइम्स। ओके, तो चैप्टर 4 पढ़ लिया है, चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पेज नंबर 51 पे है हम लोग, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में।